All right, fine. Yeah. So I hope I'm audible from new account as well, right? Yeah, good. So I'm starting my screen presentation. So today's our subject is control systems. In the last class, we have seen block diagram reduction techniques, and I hope you might have practiced some of the examples, and the technique which I gave you might be helpful for you. Hope so. Okay, so keep practicing, keep solving number of questions. That's the key. Okay, so today's our topic is like alternative for uh, reducing block diagram. Okay, so how do we reduce the block diagram? So I had given you the X method. You have to put X somewhere, and then you have to calculate all the things. This X method may not work for all the questions, although it works for 80 to 90% questions if you place X at um, proper position. Okay, but it is not necessary that it will work for every block diagram. So in such cases, there are certain other ways to find out the gain or transfer function of that particular control system. Okay, so one of the ways that I told you in the last class, that we have to use some rules, and that shifting the summing point, shifting the takeoff point, and all those things. Okay, and the second method is the X method. The third method we are going to learn today is that is SFG, or signal flow graph. Okay, so what we do in signal flow graph, we reduce the block diagram into a graph, and with the help of certain formulas or certain theorems, we find out the transfer function of control system, or we find out the gain of the control system. Okay, so first of all, how do we draw signal flow graph? Okay, so I will take one block diagram here, and then I will elaborate how can we draw the signal flow graph for it. Okay, so allow me to draw the diagram. Just a second. Okay, so let us suppose a summing point is here. Summing point is here. Okay, and then we have block G1. Then we have another summing point. Then we have block G2 here. Then another summing point. Then we have G3 here, and this is C. This is input R, and one takeoff point is here, and one feedback H1. This is H1. H1 feedback is coming over here. Okay, and the sign doesn't matter. Sign can be anything. Okay, or let us suppose minus here. Now, next feedback we have is, we have a takeoff point here, and this is another block, that is G4, which is going here. Okay, and it is plus only, plus plus. This is plus, that is minus, and the last one we have is one feedback H2 is coming from this side. Okay, and the sign for this is also, this is plus, this is negative. Okay, so let us suppose this is a block diagram, and we have to draw a signal flow graph for this diagram. Okay, so to draw a signal flow graph, first of all we have to define how many number of nodes will be there. Okay, there are certain rules to define nodes. So see, the first node will be this, that is R. Okay, and we don't consider it as a node. All right, the second node is, we have a summing point, so it will be a second node.
All right. After that, we have second node. This is first node. Okay, this is second node, and this is third node. After that, we have this complete as a fourth node. This is fourth node. Okay, and this is the fifth one. Now, you might have a question like, sir, for summing point, we took one node. For takeoff point, we took one node. Again, for summing point, we took one node. And for summing point and takeoff point, we are taking one node only here. And for takeoff point, we have one node. Okay. So when takeoff point comes after summing point, when takeoff point comes after summing point, we can merge it into one node. We can merge it into one node. But takeoff, if takeoff point is before summing point, then we have to take the takeoff point node separately and the summing point node separately. So I'm talking about node. What is node? Okay, so let us let just draw the SFG or signal flow graph for this. Okay, so मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमें कितने nodes है? We have 1 2 3 4 5 nodes है. So this is R. Okay, this is R. This is first node. This is second node. This is third node. Fourth one. All right, this is fifth one, and this is the last one, that is C. Okay, so draw कर लो इस तरीके से. एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैं नाम दे देता हूँ इसको. दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, आर से लेके फर्स्ट नोड के बीच का गेन क्या है. व्हाट इज द गेन बिटवीन आर एंड फर्स्ट नोड? इट इज नथिंग बट 1. ठीक है, अभी फर्स्ट नोड से सेकंड नोड के बीच में क्या है? व्हाट इज बिटवीन फर्स्ट नोड एंड सेकंड नोड? इट इज G1, as you can see here. Okay, so this gain will be G1. Between second node and third node, what is gain? क्या है gain? कुछ भी नहीं है. See, this is our second node, this is our third node, so we will give it as 1. एक गेन है. अभी थर्ड नोड और फोर्थ नोड के बीच का गेन क्या है? थर्ड नोड और फोर्थ नोड के बीच का गेन है G2. Remember the direction. Okay, and between fourth node and fifth node we have gain G3. ठीक है, तो ये मैंने एक फॉरवर्ड पाथ ड्रॉ कर लिया एंड रिस्पेक्टिव गेन मैंने इस तरीके से लिख दिया. नाउ अभी अगर आप देखोगे तो फोर्थ नोड से एक फीडबैक लूप जा रहा है तीसरे नोड पे, थर्ड नोड पे. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ नोड से एक फीडबैक लूप लूंगा ऑन द थर्ड नोड. And what is the what is the direction? Direction will be from 4 to 3, and its gain will be minus h1. Now why minus h1? Because the minus sign is here. Okay, now again, if you can see, there is one feedback or the forward loop we can say from second node to the fourth node. ठीक है, so second node से fourth node पे मुझे एक इस तरह का पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा, और इसका गेन क्या रहेगा? इसका गेन रहेगा G4. All right, G4. Now what is remaining? Last loop. This is the bigger loop, isn't it? So वो fifth node से है. See, it is originating from fifth node and it is terminating at first node. Okay, so how we will draw this? We will draw this like this, and its gain will be minus h2. Why minus h2? Because negative sign is here. Okay, so this is how we draw a signal flow graph with the help of ब्लॉक डायग्राम. एनी डिफिकल्टी? कोई भी क्वेश्चन है कि अब सर किस तरह से किया समझा नहीं? ब्लॉक डायग्राम की मदद से सिग्नल फ्लो ग्राफ आप ड्रॉ कर पाओगे एवरीवन? एनी डिफिकल्टी? बताना जरा चैट बॉक्स में. ओके, सृष्टि इज कॉन्फिडेंट. ऑल राइट, if you want I will repeat it. Okay, if not then we will proceed for the next things. Okay, fine. All right, ठीक है. So अभी कौन सी टर्मिनोलॉजीज है वो हम यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है,
So this is again, see, दो नोड के बीच में कुछ भी गेन नहीं है मतलब 1 है. Okay, so this is called as path gain. Okay, not only this, this G3 is also path gain. Okay, G2 is also path gain. Minus H2 is also path gain. Okay, the gain between two nodes is called path gain. After that, this is output node, this is input node. All right, and now the thing we have to learn is loops. Okay, loop. Now let us suppose we are starting from this, we are starting from this point. All right, and we are going forward. So we are going here, and then we are coming back to the same point. So this is one loop. This is one loop. All right, so the loop, we will name it as L, and its gain will be minus G2 into H1. This is loop gain. This is called loop gain. So this is first loop. So now tell me whether this is a loop, like if we go from node 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 2. Is it a no, is it a loop? Is it a loop? No, it's not a loop. Why? Because see the direction. Direction matters. Right? Yeah. So now if we start from node 1, 2, 3, 4, 5, and this, if we come back, is this a loop? It is a loop. Okay, so L2 can be written as minus G1, G2, G3, and 2H2. So this is a loop, isn't it? Now, is there any other loop? Is there any other loop? Can you name the loop? देखो मैंने L1 को क्या लिखा, माइनस G2 इंटू H1 लिखा. L2 लूप मैंने फॉर्म किया, सो उसमें है माइनस G1 इंटू G2 इंटू H2, G1 into G2 into G3 into H2. No other loop. Okay. So yeah, Srishti, concentrate here. Okay. I'm starting from node 1, going to node 2, and then directly to node 4, and then to node 5, and then coming back. Isn't it a loop? It is a loop, isn't it? So yeah, one more loop is there. Okay. So you don't have to miss any of the loop. So first thing first, yeah, what we have to find out? We have to find out how many number of loops are there in the signal flow graph. This is very important. Even if you may miss one loop, your answer is going to be wrong. Okay, so yeah, this is done. Now the thing we have to learn is forward path. What is forward path? The path which starts at R and which ends at C without repeating a node. उस पाथ ने एक नोड को दो बार क्रॉस नहीं करना चाहिए. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पाथ. ठीक है, सो अभी हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम? कैन यू टेल हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स आर देयर? Two forward paths are there. Two forward paths are there. Which one? See, we are starting from R. G1 into G4 into G3 is the first path. All right, and second one is G1 into G4 into G3. That is second path. Okay, so forward path, and we have to calculate what? We have to calculate loops also. So these two things are very important: forward path and loop. Now the third thing we need to find out is non-touching loops. So what is non-touching loops? Non-touching loop are the loops which do not share any node. मतलब उन दोनों में कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए. They should be completely separate in this diagram. So as far as this diagram is concerned, there is no non-touching loop. There are only two loops, and both loops are touching and at node 4. Okay, so these three things are necessary to analyze or to find out the transfer function of a system. Okay, now I'm giving you one system, or uh, instead of giving you a system, I will directly give us SFG, that is signal flow graph, and you have to find out number of
forward paths, you have to name it p1, p2, p3, p4, and number of loops and number of non-touching loops also. All right. So guys, I'm drawing the SFG. Please, you also draw with me. Okay. So this is R. This is my first node. This is second node. Sorry. This is second node. This is third node. This is fourth node. This is fifth node, and this is C. That is output. Okay. Now from first node to the fourth node, we have one loop, and we have one loop here also. Then we have one loop here also, and then lastly we have one loop here. So wait, I will give the path gain also. This is 1. Let us suppose this is A, this is B, this is C. Don't get confused between this C and this C. Consider this as a capital C, this as a small c. Okay. Then we have D, then we have E, positive E, then we have F, and then we have G. So calculate number of forward paths. Name it directly. Write it as a P1. Let us suppose P1 is there. So what is it? A, B, C, D. A, B, C, D is the P1. Then what is P2? P2 is what it can be? GD, GD, GD is again a P2. All right. Now, third path, third forward path is AF, isn't it? A and F. Then is there any other forward path, guys? Is there any other forward path? AF is there. AF is done. All right. Is there any? No. Look hard. Look hard. That's where we may commit mistake. See, मैंने क्या कहा? Forward path ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी नोड जो है वो दोबारा रिपीट ना हो. So if you see, I go from this to this and this, कोई भी लूप, कोई भी नोड यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है. So GEF is the next forward path. Okay, so the fourth forward path is GEF. All right. Now these are the forward paths. Now try finding out loops. Okay, wait, huh? Wait. One more thing is, sorry. Sorry, just wait a minute. I had to cancel the presentation because accidentally I opened a different tab which I wasn't supposed to open. Yeah, right. So guys, we have found out forward paths. Now try finding out loops. So what I was talking about is, so this should be named as H. Okay, is named as H. So find out the loops. How many loops are there? How many loops are there? Very easy. Find out. Two loops are there. Very good. Name it. L1. What can be the L1, guys? L1 is simply H. देखो ना ये लूप है ना यहाँ पे एक H. L2 can be B, C and E. B, C and E. It is B, C, E. Apart from these two loops, any other? I don't think any other. All right. ठीक है. Now tell me how many non-touching loops are there? How many non-touching loops are there?
Guys, everyone respond. Raman and Srishti being very active. Shardul and Makka are also responding. Everyone please respond. Aditya, Shubham, Shardul, Akhil. Guys, are there any non-touching loops in this diagram? मतलब ऐसे दो loops. See, there are two loops only. You just have to see whether these two loops are non-touching. No, they are not non-touching. They are sharing one node, isn't it? So no non-touching loops are there. No, yeah, that's okay. So यही हमें फाइंड आउट करना है. ये तीन चीजें अगर हम फाइंड आउट करने में सफल हो जाते हैं या फिर एक्सप्लोर हो जाते हैं तो we will we will be like easily solving the examples. Okay, now one more SFG I'm gonna give you. Okay, and try finding the forward paths and loops in that. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, wait. So we have 5 nodes here. How many? 1 2 3 4 5. Okay, and this is output node. This is input R, and we have from first node to third node. This is H. Okay, this is A, B, C, D. This is one. This is one. Again, we have one self loop here. Guys, this is called as self loop. Okay, it starts from the same node and ends at the same node as well. Then we have G here. Then we have F here. And then lastly, we have E here. So how many forward paths are there? Start typing the names of forward paths. Right, everyone, forward paths from R to C. First of all, ABCD is there. Very good. ABCD done. Now next one, HCD. All right. HCD is there. HCD. All right. AFD. A, F, and D. Very good. AE. Yeah, A is again there. Forward path. All right. Yeah, done. HGFD. HGFD. Yeah, that is again one. Correct. Is there anyone? AHE. AHE. No, AHE should not be there, na Shubham? HGE. HGE can be there. HGE. All right. So you have written all the names here, right? So I will list here how many forward paths are there. So P1 जो है वो है A B C D. P2 जो हमारा था वो आपने बताया H C D. P3 जो है वो है A F D C. A, where is F D. P4 we have is AE, A and simply E. Then we have P5 as H G F D. H G F and D. And last one we have P6 is H G E. This is H, this is G, and this is E. Okay. So number of loops. All right, number of loops. We have to find out number of loops. How many loops are there? Hmm. How many loops are there, guys? BG. K. Yeah, BG is the loop. All right. I is the loop. All right. All right. Any other? I. Okay. I is the self loop.
Okay, two loops you have found out. Let me just write it here. Okay, so that it will be easy for you to just not repeat the loops. Okay, so L1 is BG and L2 is I. Apart from these two loops, any other loop is there? Apart from these two loops, any other loop? HGA? No, 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 Shardul. HGA cannot be the loop. HGA cannot be the loop because see the direction, na? We have to start from the node and we have to come back to that node only. Two nodes we have found out. Okay, BG is there, I is there. No any other loop? No. Is it? Now, how many non-touching loops are there? These two are non-touching loops. BG and I are not touching each other. Okay, they have separate nodes. Like see, BG lies here and I lies here. So there is no common point between them. Okay, so these are non-touching loops. All right. So यहाँ तक तो हो गया हमारा. अभी हमें फॉरवर्ड पाथ किस तरह से फाइंड आउट करना है ये पता हो गया. लूप्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो पता हो गया एंड नॉन टचिंग लूप्स कैसे फाइंड आउट करना है ये पता हो गया. तो अभी ये सब चीजें हम पढ़ क्यों रहे थे. Okay, so before that what I would like to do is please draw a SFG on your own. आप अपने खुद से SFG ड्रॉ करो और इसमें जो फॉरवर्ड पाथ है, लूप्स है और नॉन टचिंग लूप्स है वो मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पे पिंग करो चैट बॉक्स में. First of all, draw the SFG. If you are comfortable, take the screenshot of that SFG and post it on our group or post it private to myself on chat WhatsApp. I will check it. Okay, and but that is not important. Even if you like draw or not, don't draw, that is different thing. But you have to find out forward paths and loops properly. Okay, so first of all, draw the SFG. Take your time, draw the SFG and find forward paths and loops. Is at least draw the SFG जैसा कैसे भी आप ड्रॉ कर रहे हो. पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप. ठीक है, अभी यहाँ पे आप इमेज तो शेयर नहीं कर सकते ना. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यू कैन पोस्ट ऑन द ग्रुप और टू पर्सनल मैसेज. ऑलराइट guys, I want all of you to please draw this because there are at least 4 or 5 of your concepts will be cleared when you draw this. Okay, so take the time of 2 or 3 minutes, draw it, send on the group or send me to personal, and then we'll see how it goes. Then I will understand where did you made mistakes. Okay, somebody has got is it forward paths or what? Okay, Makka is saying like this is a G1 G4 G2. So Makka name it now, like P1 is equals to G1 G4 G2, so I will understand. Okay, forward paths, so name it P1 P2. Yeah, forward paths are correct. I think you didn't draw the graph and you are directly solving it. Maybe don't do this. Sometime it may uh, put you in a trouble. So guys, are you drawing or not? If you're not drawing, then I will draw and we will proceed. Okay, Raman has given the SFG. All right. All right, Raman. ठीक है. तुमने जो SFG draw किया है ना, that is a good one. But Raman, here you have taken one node between G1 and G2, which can be reduced.
okay, which is not wrong actually, but which can be reduced. ठीक है. Also you have taken two nodes for first and second first and second summing point, so it can be again reduced. Yeah, both can be multiplied. Yeah, all right. ठीक है, but good one, Raman. It is good one. It is very systematic. All right. Yeah. Anyone else? Guys, go stepwise. Okay, Shardul has sent me the graph. Yeah, Shardul. Almost, almost. I won't say almost. It is correct. It is correct. But it can be reduced. Okay, you have drawn correctly, but it can be reduced. No issues. So, guys, see, I'm gonna give you answers now. Focus. So, first thing you have to define is you have to make sure how many nodes will be there. How many nodes will be there? So, from this graph, this can be considered as a one node only. No need of two nodes. Okay, this can be considered as a one node. This is our first node. After that, this one. After that, G1 and 2 G2. Okay, after G2 we have one node. Yeah, all right. So this is going to be a single node only. This is our second node. Okay, and this can be taken as one node. This can be taken as one node, but I won't recommend you to do so. What you will do, what we will do, we will take it as a third node and we will take it as a fourth node. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमें चार नोड्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नोड कितने ड्रॉ करने हैं ये हमें पहले फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, तो 1 2 3 4 नोड मुझे ड्रॉ करने हैं, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट आर एंड सी. तो ड्रॉ इट. दिस इज आर, लीव इट. दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड नोड, दिस इज थर्ड नोड, दिस इज फोर्थ नोड एंड दिस इज सी. ऑल राइट. सो ये मैंने तीन नोड तो ड्रॉ कर लिए. नो बिटवीन R and first node, what is there? Nothing is there. Between R and first node, nothing is there. So I will give it as 1. All right. Now, between first node and second node, what is there? G1 and G4 is there. Right. Between first node and second node, we have G1 and G4. So these two are in series, which can be cascaded. We have seen in the last class. So it can be written as G1 into G4. Okay. So यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये जो path gain रहेगा ये रहेगा G1 into G4. Done. Now, between my second node and third node, what I have G2. second node और third node के बीच में G2 है. All right. So यहाँ पे मैं G2 लिखूंगा. Now, between third node and fourth node, what is there? Between third node and fourth node, nothing is there. Nothing. So we can write it as 1. ठीक है, जिन लोगों ने SFG ड्रॉ किया है ना, आप चैट बॉक्स में फॉरवर्ड पाथ्स और लूप्स लिखना शुरू कर दो. Name it as P1, P2, P3, P4, how many are there? Okay, and loops का भी वैसे लिखना है L1, L2 and so on. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखना शुरू कर दो चैट बॉक्स में. जिन्होंने SFG ड्रॉ किया है, जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया है, यू फोकस हियर. सो ये हमारा एक फॉरवर्ड पाथ हो गया. अभी हमें फीडबैक लूप्स भी तो यहाँ पे दिखाने हैं. सो सी, फर्स्ट नोड में से कहाँ पे क्या जा रहा है, तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं जा रहा है. फर्स्ट नोड में से हमारे यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं जा रहा है. फर्स्ट नोड पे इंस्टेड दो फीडबैक आ रहे हैं. सेकेंड नोड से एक फीडबैक जा रहा है और सेकेंड नोड से एक्चुअली दो फीडबैक जा रहे हैं. राइट, सेकेंड टू थर्ड एंड सेकेंड टू फर्स्ट. ठीक है, सेकेंड टू थर्ड एंड सेकेंड टू फर्स्ट. तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो. सेकेंड इज दिस, माई सेकेंड नोड इज दिस. सेकेंड टू थर्ड में एक जा रहा है एंड सेकेंड टू फर्स्ट एक जा रहा है. राइट. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दोज, what will be the path gain? This is G3. सेकेंड से थर्ड में जो जा रहा है दैट इज पॉजिटिव G3 एंड सेकेंड से फर्स्ट में जो आ रहा है दैट इज पॉजिटिव H1. ऑलराइट. सो ये रहा G3,
ये रहा H1। राइट, नाउ पहला जो नोड है उस पे दो इनपुट्स आ रहे हैं, सो H2 इज रिमेनिंग। राइट, H2 का सिंबल यहाँ पे देखना माइनस है, सो वी आर गोइंग टू टेक H2 आ कहां से रहा है, H2 आ रहा है फोर्थ नोड से, सो फोर्थ नोड इज दिस वन, isn't it? सो फोर्थ नोड से फर्स्ट नोड पे एक फीडबैक लूप आ रहा है जो कि है -H2। राइट, सो दिस विल बी द SFG, ये आपका SFG होगा। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव माइट हैव ड्रॉन लाइक दिस। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे P1 P2 हमें निकालना है। P1 इज G1 G2 G1 G4 G2, ऑलराइट, एंड P2 इज G1 G4 G3, which is correct. Now loops, first loop will be G1 G4 H1, first loop is this G1 G4 H1, so आपने फॉरवर्ड पाथ्स तो लिख लिए, L1 will be G1 G4 H1। ठीक है, एंड नेक्स्ट लूप इज, व्हाट इज नेक्स्ट लूप, G1 G4 H2, सॉरी G1 G4 G2 एंड H2। देखिए यहां से इस तरीके से ये भी तो एक लूप हुआ ना, isn't it? सो L2 को मैं कैसे लिखूंगा, L2 एक्चुअल में कैसा हो रहा है, G1 G4 G2, लेकिन मैं एक सीक्वेंस में लिखता हूं ना, तो G1 G2 G4 एंड H2, और यहाँ पे एक माइनस का सिंबल है तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट लूप क्या होगा, थर्ड लूप, इज देयर इन थर्ड लूप, या इट इज देयर, देयर इज अ थर्ड लूप। ओके, सो हम अभी मैं इसको, सॉरी, ठीक है, so this is minus। Now what I will do, I will go from this to this to this and this। all right, so L3 will be equal to, मैं माइनस का सिंबल पहले देता हूं H2 का, so G1 into G3 into G4 into H2, so this is L3। so ये तीन लूप्स हुए, ठीक है ना, ये तीन लूप्स हुए। इज देयर एनी लूप एक्सेप्ट दीज थ्री, नो, आई गेस देयर इज नो एनी लूप, ये तीन ही लूप है। ठीक है, एंड हाउ मेनी नॉन टचिंग लूप्स आर देयर, नो नॉन टचिंग लूप इज देयर, all the loops are touching each other। Okay, so this was the practice। now we have Mason's gain formula। जो चीजें हमने फाइंड आउट की इन द लास्ट फ्यू एग्जांपल्स, वही चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। व्हाट इज Mason's gain formula, t is nothing but the transfer function or the gain summation of k is equals to 1 to k pk into del k divided by del। अभी यहाँ पे pk क्या है, डेल के क्या है और डेल क्या है। ओके, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख लिया है। pk will be the forward path। now p1 will be what, p1 will be the first forward path। guys understand, p1 will be first forward path। similarly we have p2 p3 p4। ठीक है, तो k की वैल्यू a है, 1 है, मतलब p1 हमने निकाल लिया, अभी हमें del 1 निकालना है। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कि व्हाट इज del। ठीक है, तो डेल इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट। ओके, सो डेल, एक बार आप लिख लो ये डेल क्या होता है ना, एक बार लिख लो। ठीक है, सो डेल इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, हमने इंडिविजुअल लूप फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अगर चार लूप्स है L1 L2 L3 L4, तो आपको उन चारों को यहाँ पे ऐड करना है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। मैं डेल की डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूं। अभी प्लस 1 माइनस हुआ, उसके बाद में प्लस सम ऑफ ऑल टू नॉन टचिंग लूप्स, माइनस सम ऑफ ऑल थ्री नॉन टचिंग लूप्स। अभी ये क्या है, नॉन टचिंग लूप्स क्या है, मान लीजिए कि तीन लूप्स है हमारे पास। ठीक है, तीन लूप में से L1 और L2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन L2 और L3 एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, सो वी हैव टू पुट ओनली L1 into L3 हियर, L1 into L3।
ठीक है, L1 into L3। अगर तीनों लूप मतलब सेपरेटली है, तीनों भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो हम क्या लिखेंगे, L1 into L2 लिखेंगे प्लस L2 into L3 लिखेंगे, मतलब टू नॉन टचिंग लूप्स। इज योर अंडरस्टैंडिंग ना? सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स तो आपको समझ में आ गया, वन माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल टू नॉन टचिंग लूप्स, मतलब जो कोई भी दो लूप्स जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, हमें उनकी सम लिखनी है। सिमिलरली अभी दो नॉन मतलब हमने दो दो के ग्रुप बनाए या फिर पेयर बनाए कि ये दो ग्रुप, ये दो लूप्स जो है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इस तरीके से हम पेयर्स बनाएंगे। अभी तीन लूप्स है, मान लो तीन लूप्स है हमारे पास, L1 L2 एंड L3। सो तीनों भी लूप एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, सो हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर? हाउ मेनी पेयर्स विल बी देयर? टू पेयर्स विल बी देयर, इजंट इट? L1 into L2 एक रहेगा और L1 into L3 एक रहेगा, और थर्ड होगा L2 into L3। तीन पेयर बन सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, L1 into L2 प्लस L2 into L3 प्लस L1 into L3 ऐसा लिखेंगे, सम ऑफ ऑल टू नॉन टचिंग लूप्स में। अभी थर्ड क्या है, थर्ड में हमें थ्री नॉन टचिंग लूप्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से तीन लूप्स है जो कि नॉन टचिंग है। थ्री नॉन टचिंग लूप्स हमें रेयर केस में फाइंड आउट करना होता है। कभी कभी मतलब ऐसा सवाल आएगा आपको कि तीन नॉन टचिंग लूप्स आपको मिलेंगे, मोस्टली ऐसा नहीं होता है। टू नॉन टचिंग लूप्स ही आपको रेयरली मिलेंगे, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं, हमें जब एग्जांपल लेंगे ना तब आपको समझ में तो आ ही जाएगा। सो दिस इज डेल, विच डेल? द डेल विच इज इन डिनोमिनेटर, this is del, this will be del. Okay, now pk is what? Pk is, or p1 is the forward path, then we have to find out del 1 also, and then we have to find out del. If two forward paths are there, so we have to find out p2, del 2 and del. If three forward paths are there, so p3, del 3 and del. ये जो डिनोमिनेटर में डेल है वो हमेशा सेम ही रहेगा, डेल वन चेंज होगा, डेल टू चेंज होगा, डेल थ्री चेंज होगा, पी वन पी टू पी थ्री तो हमारे पास डायरेक्टली हम फाइंड आउट करते हैं। तो डेल वन डेल टू डेल थ्री कैसे फाइंड आउट करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेल वन हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डेल वन के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा गाइस, सेम फॉर्मूला फॉर डेल वन, बट p1 is going to be multiplied with del 1, so we have to only include such loops which are not touching forward path p1। मतलब डेल वन में सिर्फ हम, सी सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स बोला है ना यहाँ पे हमें हमें तो हम सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स ही करेंगे, लेकिन उसमें से कोई भी लूप ऐसा नहीं होगा जो कि पाथ P1 को टच कर रहा है। पाथ P1 को टच करने वाले लूप को हमें लेना ही नहीं है, उससे डायरेक्टली हमें जीरो पुट करना है। सिमिलरली सम ऑफ ऑल टू नॉन टचिंग लूप्स, ऐसे दो नॉन टचिंग लूप्स जो कि फॉरवर्ड पाथ P1 को टच नहीं कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? ऑलराइट, ठीक है, जब हम एग्जांपल लेंगे ना तब समझ में आएगा, लेकिन कंसेप्ट समझने की भी कोशिश करो, ठीक है? तो P2 के लिए हम क्या करेंगे, P2 के लिए डेल टू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला विल बी देयर फॉर डेल टू ऑल्सो, बट वी विल नॉट इंक्लूड एनी लूप विच इज टचिंग P2। फॉरवर्ड पाथ P2 को जो भी लूप टच कर रहा है वो हमें लेना ही नहीं है, वी हैव टू डायरेक्टली पुट जीरो इन प्लेस ऑफ दैट, ठीक है? तो गाइज मैं आपके लिए, आपकी थोड़ी सी लाइफ इजी बनाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, एंड आपको समझ में आएगा, ठीक है? सो एक सिग्नल फ्लो ग्राफ में यहाँ पे लेता हूं, दिस इज माय आर, ओके, आर, देन वी हैव 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 and 4 nodes, this is C, this is R, wait, I'm messing up I guess, wait, 1 2 3 4, and yeah, that's it. R, C, we have A, we have B, we have C, then we have a self loop D here, its direction is this, then we have one loop G here, then we have one loop E here, and then we have the last loop, sorry, yeah, sorry guys, it should not be like this, huh? My bad.
So this self loop is here, this loop is here, and this loop is here, and the last loop is here, F. Don't get confused between this C and this C. So directly we will find out forward paths. Forward path P1 is A, B, C. Forward path P2 is F only. ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ और P1 और P2 के अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ और नहीं है. यस और नो? नहीं है ना? No. All right. Now find out loops. Find out loops. First loop is L1 is equals to AE. Second loop L2 is BG. Where is BG? This is B and this is G. Third loop we have is D. Right. And is there any loop? No, I think there isn't any loop. So these three loops are there. Yeah. L1, L2 and L3. So अभी हमने यहाँ पे P1, P2 निकाल लिया, L1, L2, L3 निकाल लिया. अभी हमें क्या करना है? डेल निकालना है. डेल में हमने क्या बोला था? से अभी डेल में हमें क्या करना है? हाउ मेनी लूप्स आर देयर? आवर फॉर्मूला फॉर डेल विल बी 1 माइनस सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल लूप्स, मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3. ये हो गया हमारा, मतलब ऑल द इंडिविजुअल लूप्स हमने यहाँ पे सम कर लिए. ठीक है. नाउ प्लस क्या रहेगा? सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स. तो गाइस, आर देयर एनी लूप्स व्हिच आर नॉन टचिंग हियर? व्हिच आर दोस? L1 and L3 are non-touching loops. L1 and L3 are non-touching loops, right? Right or wrong? अरे यार, इतना सन्नाटा क्यों है इधर चैट बॉक्स में? Guys, please respond. If you are getting confused, let me know. Okay. Yeah. So L1 and L3 are two non-touching loops. ठीक है. तो हमने क्या बोला था कि सम हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल टू नॉन टचिंग लूप्स. तो यहाँ पे L1 और L3 ये दो ही लूप्स हैं जो कि नॉन टचिंग है. माइनस हमें क्या करना था? सम ऑफ ऑल थ्री नॉन टचिंग लूप्स. आर देयर एनी थ्री नॉन टचिंग लूप्स? देयर आरंट एनी. उस यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो बस खत्म. यहाँ तक ही. अभी डेल को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? आवर डेल विल बी 1 माइनस L1 is AE, L2 is what? BG plus D, and last one is DAE. मतलब L1 इंटू L3 होगा DAE. ओके. तो ये हमारा फाइनल डेल होगा गाइस. इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते. दिस विल बी आवर डेल. मैं यहाँ पे ए बी सी डी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि समझने में आसानी जाए. G1, G2, G3, H1, H2 हमें इस तरीके के एग्जांपल्स मिलेंगे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा इजी जाएगा. ठीक है. नाउ P1 तो हमारे पास है. अभी हमें डेल कितने निकालने होंगे? हमें दो डेल निकालने होंगे. लाइक P1 एंड वी हैव P1 एंड P2, वी हैव टू फाइंड आउट डेल 1 एंड डेल 2. ठीक है. तो डेल 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी मैं डेल 1 का कैलकुलेशन करता हूं. डेल 1 विल बी सच दैट 1 minus sum of all individual loops, but provided that it should not touch path P1. Is there any loop which is not touching path P1? Is there any loop जो path P1 को टच नहीं कर रहा है? नहीं है. L1 भी टच कर रहा है, L2 भी टच कर रहा है, and L3 is also touching, isn't it? So मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा? L1 is touching, so 0. L2 is again touching, so 0, and L3 is again touching, 0. Minus, sorry, plus sum of all two non-touching loops. अभी जो individual loops थे वही वही क्या कर रहे थे? वही टच कर रहे थे. तो नॉन टचिंग तो मतलब करेंगे ही ना उसको टच. तो सिंपली मैं यहाँ पे भी 0 लिख दूंगा. ठीक है. सो व्हाट इज माय डेल 1? डेल 1 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. डेल 1 इज इक्वल्स टू 1 आया. नाउ फाइंड आउट डेल 2. डेल 2 किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम? डेल 2 फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस तो मतलब कॉमन ही है. अभी हमें चेक करना है कि कौन से लूप्स डेल 2 को टच कर रहे हैं. विच लूप इज टचिंग डेल 2? सॉरी, विच लूप इज टचिंग
P2 फॉरवर्ड पाथ 2 को कौन सा लूप टच कर रहा है या फिर कौन से लूप टच कर रहे हैं? गाइस ओनली L1 इज टचिंग P1, समझ रहे हो ना? L1 इज टचिंग P1। जो लूप L1 है AE, सी हमारा P2 क्या है? P2 इज दिस F। यहां से हम आए, यहां से आउटपुट की ओर चले गए, दिस वे, राइट? सो L1 इज ओनली टचिंग P2 हियर। L2 and L3, these two are not touching P2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स लिखना है। L1 तो टच कर रहा है, L1 को टच कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 0 लिख दूंगा। L2 टच नहीं कर रहा है, L2 लिखूंगा। L3 टच नहीं कर रहा है, L3 लिखूंगा। प्लस, आर देयर एनी टू नॉन टचिंग लूप्स टू पाथ P2? है। कौन से है? L3 एंड L1, बराबर। सो L3, तो मैं L3 लिख सकता हूं, लेकिन L1 के लिए मुझे 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि L1 टच कर रहा है। ठीक है ना? L3 को मैं L3 लिखूंगा, लेकिन L1 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। सो नाउ सॉल्व इट। इट विल बी 1 माइनस 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। L2 विल बी BG प्लस L3 विल बी D। सो व्हाट इज माई del 2? Del 2 is equals to 1 माइनस BG प्लस D। तो अभी आपको मेसन्स गेन फॉर्मूला से क्या करना है? T फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? P1 into del 1 divided by del plus P2 into del 2 divided by del. We have the value of P1, P2, del 1, del 2 and del. We have all the values। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें T यानी कि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। और व्हाट वी कैन से, वी हैव टू फाइंड आउट द गेन, overall gain of the system। Guys, is there any difficulty? Since we have 4 minutes, if you have anything like आप चाहते हो कि मैं उसे repeat करूं, so please tell me, I will repeat it। Shall I repeat the calculation of del 1, del 2, del P1, P2, anything you think I should repeat? Clear? Raman is clear, all right। What about other 7 members? Guys, everybody clear? If everybody okay, okay, calculation of del 1 and del 2, all right, I will repeat it, Akhil, no issues। ठीक है, anyone else? ठीक है, no issues। So guys, we'll quickly repeat how we calculate del 1 and del 2। See, del का तो कैलकुलेशन इजी है। del में हमें 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स लिखना है। L1, L2, L3 जितने कितने रहेंगे, मतलब 5 लूप अगर यहाँ पे रहेंगे तो हम L1, L2, L3, L4, L5 लिखेंगे, प्लस प्लस प्लस। प्लस हमें उसके बाद में क्या करना होता है कि सम ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, मतलब हमें टू नॉन टचिंग लूप्स के पेयर बनाने पड़ेंगे। ओके, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ लूप्स प्रेजेंट इन द SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ, उसके हिसाब से हमें पेयर्स बनाने पड़ेंगे कि दीज टू लूप्स आर नॉट टचिंग ईच अदर, दीज टू लूप्स आर नॉट टचिंग ईच अदर। सो इस तरीके से हम पेयर बनाएंगे। तो सम ऑफ दोज पेयर्स, अगर उसके बाद में भी कुछ लूप्स बचते हैं कि मतलब 3 ऐसे इंडिविजुअल लूप है कि जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, सो वी हैव टू मेक ट्रिपलेट्स। अभी हमने पेयर बनाया, उसके बाद हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे कि जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। सो माइनस वी विल टेक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 4 लूप्स है तो उसके बाद में हमें मतलब सो ऑन जितने लूप्स है, आप एक पैटर्न समझ सकते हो ना कि पहले हमने इंडिविजुअल लूप ऐड किया, उसके बाद में 2 नॉन टचिंग लूप्स ऐड किया, उसके बाद में 3 नॉन टचिंग लूप्स ऐड किया, सो ऑन। तो ये हमारा डेल का कैलकुलेशन हुआ। डेल 1 जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो डेल 1 फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज सेम फॉर्मूला, बट ओनली चेंज वी हैव टू मेक इज वी हैव टू take the value of loop as 0 which is touching the path P1। del 1 के कैलकुलेशन में हम उस लूप की वैल्यू 0 रखेंगे जो पाथ P1 को टच कर रहा है। del 1 के कैलकुलेशन में जो लूप P1 को टच करेगा उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ऑल अदर कैलकुलेशंस आर लाइक del ओनली। del में जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वही कैलकुलेशन रहेगा, ओनली द वैल्यू ऑफ लूप विच इज टचिंग P1 विल बी 0। जब हम del 2 का कैलकुलेशन करेंगे, जब हम del 2 का कैलकुलेशन करेंगे तो तब हम क्या करेंगे, विल नॉट लुक फॉर P1 का हमें मतलब कुछ भी संबंध नहीं। अभी अभी हम del 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, सो वी विल फोकस ऑन पाथ P2। P2 को जो भी लूप टच करेगा उसकी वैल्यू सिंपली हमें 0 रखनी है। ऑल अदर कैलकुलेशंस, ऑल अदर वैल्यूज विल बी सेम।
ठीक है, तो इस तरीके से हम डेल वन डेल टू कैलकुलेट कर रहे हैं। इट माइट नीड, मतलब ये जरूर हमें जरूरत पड़ सकती है कि हमें डेल थ्री भी निकालना पड़ सकता है। कब डेल थ्री निकालने की जरूरत पड़ेगी? जब तीन फॉरवर्ड पाथ्स हो। जब चार फॉरवर्ड पाथ्स रहेंगे तो हम क्या निकालेंगे? P1 P2 P3 P4 निकालेंगे, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट डेल वन डेल टू डेल थ्री डेल फोर, सिमिलर फैशन। ठीक है, डेल वन निकाल रहे हैं तो पी वन को हमें ऑब्जर्व करना है कौन सा लूप टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर अगेन। ठीक है, सो इस तरीके से हमें करना होता है एस एफ जी में। So there were some other points I wanted to take, but we don't have time. Okay, so guys, it is 9:30 already. I hope it is the whatever I have taught you today, you have understood. Okay, so mostly we will be having our aptitude class on Wednesday at night, 9 p.m. 9 p.m. Okay, 9 p.m. will be our timing, and yeah, we are trying to shift the timing of Saturday Sunday classes to 8:30 p.m. or 9:30 p.m. I hope it will be comfortable for everyone. Okay, so yeah, in the next weekend we will be having our classes at 8:30 or 9:30 only. All right, अगर किसी को कोई दिक्कत है टाइमिंग की, so you can ping me, because once we set the timings, no, we are not going to change. ठीक है, we are going to fix one timing and we are going to follow that only. All right, ठीक है, so that's it from my side, guys. uh, now you are free to leave. Thank you, bye bye, have a good night, bye. Yeah, bye everyone. Makka, you have to leave the class. Otherwise, the recording won't stop. Okay. Makka, leave the class. Makka Vinu.